Hello all, a warm welcome to all of you in the 20th session of Chess with Gaurav Bakliwal session 2. I am Sanjit Ravindran from Pune, India. It's my privilege and honor to be a volunteer for today's session. Today's game was played between Serper and Lonis in 2016. This game is one of the best attacking games of chess ever. It's an outstanding piece sacrifice game and awesome tactical play focusing on checkmating the opponent king. After that, Gaurav sir will show an amazing move of the day played by Idinger. So without wasting much time, I would like to invite our own Gaurav sir to take the session forward. Okay, thank you, Sanjit. Thank you very much. And what a nice, anchoring and what a nice start you have given to this 20th session. And my dear friends, I am feeling very, very, honored, blessed, privileged. Our season two, we are doing 20th session today. Can you believe? The time flies so fast. I mean, 20th session. Today is the 20th session. Wow, very nice. Of the season two, actually. Okay, so today's game, first of all, I would like to apologize to Sanjit. The data that I gave it to you, this game, later on I realized this game was played in 1993 between, the two players today, Sarpar and Yanis. And this is one of the most attacking games. In fact, Chess Informant has classified this game as the second best attacking game of the 1990s out of a list of some 666 or 670 odd games they received. First one is, of course, no points for guessing. If you are chess fraternity lovers, you will probably realize that the first attacking game was Kasparov versus Topalov, which also I have covered earlier, and that game has been unanimously voted as the best ever game in the history of chess so far. So today the game I have taken, Sarpar is the grandmaster from USSR. He was born in Tashkent, and later on he shifted to United States of America. And he's a very strong grandmaster as well, around 25, 90, 2600 kind of rating. And in World Juniors in 1988, he was fourth, and Ivanchuk, Gelfand, and all these kind of players were first, second, fourth, and so on. He was third. He was third in World Juniors 1988, Sarpar. Now, Ianis is also a grandmaster, and he's from Greece. The game that I have taken today, as I told you, is the second best attacking game all time ever, which has been voted by Chess Informant in 1990s. Okay, so now let's share the screen and let's see the today's game, my dear friends. Yes, of course. Good evening to Saket. Uh, good evening, Ilakshi, Rimjim, I think, Suhani, Sharvi, of course. Aditi from USA has joined us. Good evening, everyone. Good evening to Pradosh as well from USA. Okay, you all can write in chat. No problem. You can write in chat. You can contribute in your wishes as well as how you feel about the sessions and everything. Right. So I can't see Sanjit, I can't see you. Is your camera on now? You can on your camera now, Sanjit. Okay. Sanjit, are you there? Is it? Have you on your camera? Yes, sir. Yes. Okay. Right. You can speak. You can speak. Okay, sir. Yes. Yes. Very good. So let's start the today's game, my dear friends. White is Grigory Sarpar and black is Ionis. One of the most greatest attacking games ever, which has been voted as second best attacking game in the 90s by Chess Informant. The first was, of course, Kasparov versus Topalov. So the game started c4, g6, e4. And in the beginning, we have got irregular opening now. c4, g6, e4. So white is trying to weaken the d4 square. Now there are two options. One is bishop to g7, and there is one more option here, which is pawn to e5. Immediately you can probably try to take care of this. This is the option. So the e5, the game might continue d4,
knight f6, pawn into, knight into, bishop to d3 and d5 with almost equal position. Yes, Saket, you are right. Well done. English opening. C4 is English opening. Okay. I think I should change the board theme because the arrows are not very much visible. This is better, I guess. Right. Okay. So now the game continued e4, bishop to g7, and white continued with d4, gaining the control of the center. b6, knight to c3, knight f6. So far, so good. Both players are trying to get their pieces out, piece development, center control, king CFT. There are three rules of chess, which my students always remember. And now, in this position, one idea can be bishop e2, and then probably you can play bishop to e3, you can play d5, and you can probably go for f4, f3, f4 ideas. This is one idea actually. And one idea can be knight e2 here, knight e2, and then we try to play knight g3. So you have to take a decision at this point in time whether you want your knight e2 g3 idea, or you want simple bishop e2, and then the knight can probably come to f3 as well later on. So this is the time when white has to take a decision about it. And if you play bishop e2, it's a very, very natural move. The game might continue here. Castle, bishop e3, knight c6, d5, knight to e5, f4, and then knight to g4, attacking the bishop on e3. So this is a almost equal position again. Slide better, I would say to white. Slide better. And computer gives here plus 0.6. Slide better. Right. So let's see what happened in the game here. White played knight to e2, knight g2, which is also very good, no problem. This is also a kind of a decent move here. And after knight to bd7, of course, black had one option of castle here. He could have castled here. And I don't know sometimes why grandmasters don't castle. I really don't understand. So castling is a very natural move here. And after knight to g3, knight d7, bishop e2, e5, d5, knight c5, h4 and h5. It's almost equal position, my dear friends. I would say slight better for white, but that's okay. I mean, white is almost always slight better. So I don't understand why these guys don't castle actually. Knight bd7 is played, which is not bad. He might castle a move later, not a problem. It's fine. So after knight to g3, c6 was played by black. Again, he is not doing castling, my dear friends. And then bishop to e2, a6 was played. I mean, he just wants to play b5. He is not interested in doing castling because he feels that the knight is on g3, so h4, h5 is on the cards. But I don't understand. Whenever white plays h4, black has always got h5 to play. Always he can close the king side advance. So I would recommend castling here. And somehow black did not do the castling. So after bishop to e3, h5 was played by black. So maybe he himself wants to play h4 for all you know, attacking the knight and maybe trying to force the knight to go to f1. Maybe this can be the idea. f3, and in this position, h4 was a very important move. Now that you have played h5, if you don't play h4, why have you played h5? So after h4, it's completely equal position, knight f1 and b5. Rook to c1, rook b8, knight d2, castle. Finally, black can castle. And after castle, e5. Computer gives here 0.0, exact equal position. So this should have been played in the game. But coming back, black is very ambitious and he played the move b5. And now a good move for white is certainly to do the castle, so that if black plays h4, the knight can come to h1 and then f2. This can be a good idea here. But white also did a slight mistake here, which is c5. It's not very required at this point in time. He should have castled first. And now
after pawn into pawn, now black missed the chance of h4 and get the advantage. Please understand, after h4, it is very good position for black. So in this position, h4 was very, very important. But what did he play? He played the move queen e7, which is also not very bad, but he has missed the chance of h4. And now white did castling, after which he played h4 and he played knight h1, which he wanted. And now audience, your turn has come now. In this position, how should black play? What do you think is a good move for black, which will still give him some advantage? Yes, Sanjit, can you speak? Yes, sir. I would play h3 as if he would capture by the pawn on g2, then the castling will be of no use because the castling is done to protect the king. Then maybe the game would continue. Okay. So what basically you are saying is castling. Yes, sir. Um, Okay. Audience, please write in chat. Castling is written by Saket as well. Come on, audience. Ilakshi, please write. Suhani, Rahul. क्या लगता है आपको यहाँ पे? Ilakshi is writing h3. Okay, h3 should be played. Now, if you play h3, it's a good idea actually, but then it's too premature. All pieces are very backward, and white can simply play g3 here. And then you have, it will be hard to do any kind of attack. And in the end game, this pawn can become weak as it is. So I would not recommend h3, but your idea is good to play on king side. So black should have played the move g5 here. This is a very, very nice idea. G5. And if you capture here, if you don't capture, then g4 is of course coming up. And if you capture, then there is knight into c5. And the g file is also open for later on. And we have captured the very dangerous c5 pawn. So after bishop to e3, knight f to d7, this position is a very, very nice position for black. But coming back in the game, black played the move knight h5. And now the computer gives plus for white. This move is not very good move, knight to h5. Now slowly and gradually you will find that white will soon attack on this king in the center. Slowly and gradually. He'll coordinate the pieces in such a manner that there will be a clear attacking ideas. So queen d2 was played, e5, knight f2, no problem getting the knight in the game. It is on h1, getting it in the game. And here comes one more error, knight f8. The idea of knight f8 is to open the bishop, get the knight on e6, probably target f4 square, and so on. But this is not correct move. The only correct move here is knight f4 immediately, which will give equality to black. Equality, knight f4 must be played in this position. There is a support of queen, no problem. And if you play rook to d1, then the knight e6, attacking c5 pawn. And it is almost equal position. It is almost equal position. So here, knight f8, an audience. Now comes the idea. Come on now. Sanjit, what do you think? A very good move of white. All of a sudden, white has developed all his pieces. The rooks are coordinated. The rooks are connected. Queen is d2, bishop on good squares. King is on e8 in the center. And now you must go for the kill. Any genius person in the audience. G4, very bad move. No, no, no. Don't open your king. That's what he wants. H3, not very good move. No, no, no.
Knight will get a very good g3 square. No, no, no. You have to attack. Come on, guys. How to attack on the lone king here? King in the center. Rook d1 is written by 2-3 people as well. Rook d1, I would say, is a good move. It's a very positional move, but it's not the best move. Come on. And here comes the attacking ideas. This is the 16th move of the game. Knight g4, f4. Oh, audience, you have been with me with so many sessions. At least you must understand which side to play. Sir, f3, g3, knight g4, f4. You are trying to play on the king side. Don't do that. His all pieces are on the king side. Why are you opening your king? Yes, Sanjit, speak up, my dear Sanjit. sir, I think the move is f4. f4 is not correct. No. You are trying to open on the king side. Don't do that. Sharvi is absolutely right. She's saying that we have to play on the queen side or in the center. I would say in the center. So how to play in the center? Rook d1, but then nothing in that. A4 is written by Pradosh. A4, Pradosh, the global student. Hints. I have given enough hints already. Play either on the queen side or in the center. So the correct move here is A4. Well, very, very nice move. Attacking the pawn on B5 and the rook into rook can happen. And what a nice move it is. If you capture here, then your A6 pawn become very weak. So the move is played by B4. And now audience, one more. Can you find an amazing move played by white? It is a very, very difficult move to find. There is nothing immediate which is happening. So you might not find this move. You might not be able to tell this move. But trust me, this is the best move of the game. Trust me on this. What is the move? Your knight is under attack. So it's a very logical move to move your knight. So where will you play your knight? What is a square? So I can see my papa as well. पापा ढोक करता हूं आपको. Please write the move. कहाँ चलना चाहिए घोड़े को? Pradosh is doing amazing today, and the move is knight d5. Well done, Pradosh. Well done. Knight d5 attacking the queen, and if you do not capture this knight, it will come to b6 and spoil your life by attacking the rook and the bishop, and then this pawn is also very weak. And at the same time, this pawn is also falling. So he has to capture. So first piece sacrifice has happened. First piece sacrifice has happened. And now black simply kept white simply captured by the pawn. So you might feel कि there is nothing happening. Immediate कुछ नहीं हो रहा है इसमें. हमने पीस पिटा है. मगर अभी तुम देखना ये दो पॉन जो है कैसी खतरनाक पौने बनने वाली है. रुक इधर आएगा, ये इधर आ सकता है, ये कमजोर है, ये दोनों बिशप खुल चुके हैं. ओ माय जीसस. अब देखो यार गेम क्या हुआ. तो यहाँ पे कंप्यूटर कहता है कि बेस्ट मूव ब्लैक की नाइट e6 है. अभी के अभी पीस वापस दे दो इस पॉन के बदले. अभी के अभी मारा तो बिशप आ जाएगा तुम्हारा, और फिर रुक c1 में वाइट इज बेटर. प्लस 0.9 दे रहा है कंप्यूटर, मतलब वाइट इज बेटर, लेकिन विनिंग नहीं है कोई. ऐसा कोई विन नहीं है. लेकिन यार तुम खुद बताओ मुझे यार, एक बात बताओ, ऐसा कोई चलता है क्या? जब तुमने एक पीस मारा है तो वाई विल वन गिव द पीस बैक इमीडिएटली? वो सोचेगा यार थोड़ा देखते हैं ना, ऐसा क्या है, बाद में पीस तो कभी भी दे ही सकते हैं. तो दिस इज द बेस्ट मूव ऑफ ब्लैक, बट ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी वेरी एंटी साइकोलॉजिकल मूव. डू यू एग्री और नॉट संजित? कोई इमीडिएटली पीस पिटाता है क्या वापस? क्या बोलते हो संजित? Sir, I don't think I would give the piece immediately. हाँ वही तो बात है.
अब ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने खेला F5 और वो कह रहा है कि मैं तो अटैक करूंगा F4 और ये भी मार लूंगा क्योंकि इसको भी घर नहीं ना। F4 पे बिशप D4 तो यहाँ पर रुका हुआ है, C5 पे पॉन है, तो ही प्लेड द मूव F5। तो व्हाइट ने क्या किया, D6, बोले पहले क्वीन बच, बाद में करना जो करना हो, पहले क्वीन बच। तो क्वीन को दो स्क्वायर है, क्वीन A5 क्वीन C6, देयर आर टू स्क्वायर्स। तो अगर वो क्वीन A5 खेलता तो the game might have proceeded queen D5 attacking the rook here, rook to A7, check, bishop to D7, queen B6, एंडिंग लेके आ रहा है, ये पीस पिटाया हुआ है लेकिन फिर भी एंड गेम खेल रहा है, तो कैप्चर। एंड नाउ ऑडियंस, what is the winning move in this position? Can you believe this did not happen in the game? But can you believe the analysis? What is the winning move? Arey Ilakshi, well done. Very good. Very good, Ilakshi. Come on, audience, everyone. What is the winning move? Suhani, well done. Oh, the move is bishop into pawn. What a move. And now these two pawns are so dangerous. And if you capture this, you are the biggest fool on the earth, because now b7, and all of a sudden you will find that there is no way to stop this pawn promotion. Your rook cannot come to b6 as well. It is guarded by the bishop. तो माय डियर फ्रेंड्स, चेस में हमेशा याद रखो, पॉन बहुत तगड़ी चीज है। घोड़ा तो घोड़ा है, ऊंट तो ऊंट है, लेकिन पॉन जो है वो अगर समय सही आया तो क्वीन बन सकती है। इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम क्वीन। घोड़े का पोटेंशियल पूरी जिंदगी घोड़ा ही रहेगा, बिशप का पोटेंशियल पूरी लाइफ लॉन्ग बिशप रहेगा गाइस। लेकिन पॉन जो आज एक बहुत ही छोटी है, इट हैज अ पोटेंशियल टू कन्वर्ट टू अ क्वीन which is very powerful and mighty. So always, you must never underestimate the power of a common man. Never underestimate the power of pawn. तो b7, बताओ मजा आया कि नहीं? क्या खतरनाक खेल है। तो d6, ब्लैक प्लेड द मूव क्वीन c6, उसने क्वीन a5 खेला ही नहीं। एंड नाउ what is the move played by white here? Any genius person here? This move is one of the most amazing moves after knight d5. This is the second probably best move of the game. Oh my god, what a game it is. What is the move? Ilakshi has written the correct answer. Saket is also correct. Oh, well done. D7 is not correct. No. F4 is not correct. Sanjit, what do you think? Sir, I think it's bishop to b5. Arey yaar, Sanjit, well done. Bishop b5 is the move, pinning the queen. Oh my god. And you are forcing him to capture. Second piece sacrificed. And after pawn into pawn, not only the queen is attacked, but the rook is also attacking the rook here. My god. If you play queen to b7, c6. My god. Queen b8. And after queen to d5, it's time to pack up your bags and resign the game. And if you capture rook into a1, this rook will also capture here. And there is nothing you can do against so many threatening 3 pawns in the center. So many ideas. Game over. So coming back to our game, when he played a into b5, black played queen into b5. He said, I have already captured 2 pieces. And I can again, f4 is also a possibility, attacking the bishop. No problem. So after rook into rook here, attacking the bishop, he played queen to c6. Now f4 is the threat. F4. Attacking the bishop, attacking the queen as well as the knight. But white has got some other ideas in the mind. That is why this is the second best game given by informant, chess informant.
What is the move here? क्या लगता है आपको? D7? नो यार, पिट जाएगी, सीधी पिट जाएगी, नाइट से पिट रही है. What is the move? रुक टू A1 लिखा है प्रदोष ने, रुक टू A1. ओके, बिशप टू G5. Bishop to G5 is written by Saket. I see. तो रुक A1 मुझे बहुत पसंद आ रही है मूव एक्चुअली, रुक A1. लेकिन वो F4 खेलेगा तो क्या करेंगे यार, ये पीस एक और मर जाएगा. Sir, what if we only play the move f4? नहीं मत खोलो यार, मैं तो नहीं रिकमेंड करता F4 चले. पहली बात तो ये मर रहा है देखो अभी तो, सबसे पहले तो उसको तो बचाना ही पड़ेगा हमें. क्वीन इंटू रुक, तो क्वीन इंटू रुक बचाने के लिए बेस्ट तरीका है रुक A1. अब उसने खेला F4, अब ये मर रहा है, ले बेटा अब क्या करे. नाउ व्हाट इज द मूव? अब ये कहीं बचता ही नहीं, यहाँ भी नहीं आता, क्वीन पीछे आता नहीं, यहाँ घोड़ा है, इसको मार के कोई फायदा नहीं, उसका घोड़ा आ जाएगा आगे. ये क्या चाल है? और अब शायद तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा व्हाइट ने क्या किया. अनबिलीवेबल मूव, अनबिलीवेबल. बिशप D4 is not correct. Rook A6 is a good move, not bad. Well done. Rook A6 is not bad. Rook A6 is written by Lakshi as well, Saket as well, one more student as well. But can you believe the move here is Rook A7? Can you believe this move? My God, taking control of the entire seventh rank. Now pay attention. If you capture here, I'm sure you might be fall off of chair. Then you realize the move is Queen D5 and Black must resign. Can you believe the game? Can you believe the game? संजीत मजा आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. My God, ये क्या चाल है ये? If you capture queen into queen, rook into bishop is a checkmate actually. My Jesus Christ. So the queen deflection from the C8 square. Oh ho ho. Even if you first capture a knight, giving a check, I don't mind capturing it. No problem. Still the threat is same. If you capture queen into queen, there is a checkmate. And if you don't capture, I am trying to capture the queen free of cost. So the game might continue queen to D7. And I have the move here, rook C8 check. My God. Queen into queen F7, king to D8. And there is a one move checkmate. My Jesus. Can you understand the idea behind rook to A7 now? What a move. He is giving this bishop. And after capturing queen D5, it's all over. So black is of course a grandmaster. I don't know why he did not castle. You might have realized why I was telling you earlier. He should castle, he should castle, he should castle, he should castle. And he played the move knight D7 here. He did not capture the bishop. He realized that queen D5 is coming. Now white captured rook into bishop with a check. After queen into, he played the move queen D5. Idea is queen E6 check. My God. And after pawn into bishop, he said, no problem, check. What will you play now? If you play king D8, well. Audience, what is the move if he plays king D8? संजीत क्या चाल है बेटा? Sir, I'm still thinking. सिंपल मेट है बेटा, चेक चाल की मेट है. देयर इज अ चेकमेट इन वन मूव. सबने लिख दिया.
क्वीन टू, क्वीन टू E7, चेकमेट संजीत, राइट। Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने खेला किंग F8 and now he simply captured rook into knight. The idea is queen F7 checkmate. अब इसको कैसे बचाओगे आप? तो उसने बोला बाद में देखी जाएगी, पहले ये मार के चेक टू। ऑडियंस क्या करना चाहिए व्हाइट को? चेक लग रही है, यू कांट प्ले क्वीन F7 checkmate. You are yourself under a check. क्या करो इसको? कहाँ चलोगे? इफ यू कैप्चर, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए पहले ही बताओ। सब लोगों ने लिखा है किंग F1, किंग F1, किंग F1। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम ये गेम तो हार ही चुके हो, अगले 4 गेम हारोगे, ये गारंटी है मेरी। अब ब्लैक चेकमेट करेगा इस पोजीशन में, कैन यू बिलीव? अगर तुमने इस पॉन को मारा, अब ब्लैक करेगा चेकमेट। कैसे? अब ध्यान से देखो, चेक, कहां जाओगे? किंग E2, आजा बेटा तुझे प्यार दूं, नाइट चेक। अब ये नाइट अलग आ गया गेम में, तो इसीलिए इस पोजीशन में खेलो किंग F1। नाइट चेक मत खाओ रे यार, बेटा वो तुम्हें खिलाएगा ही। चेक, ये चेक, नाइट G3 चेक, कैन यू बिलीव? अब ब्लैक करेगा अटैक, उसके ऊपर एक चाल की मात है, लेकिन वो तुम्हें चाल देगा ही नहीं, ही नॉट गिव यू मूव। मारना तो पड़े भाई, नहीं तो मात ही है। अब वो मारेगा नहीं, अगर मारेगा तो तुम मात कर रहे हो, वो तुम्हें चेक देगा, और जब तुम F2 आओगे तब मार के चेक देगा। मारना तो पड़े ही, मारना तो पड़े ही पड़े। अगर तुम यहाँ निकल गए तो बिशप की चेक से खुल रहा है बिशप, तो मारना पड़े। एंड नाउ क्वीन E1 चेक। हो गई क्या मात? देख लो जरा ध्यान से, ये ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, H फाइल का हाथी खुला पड़ा है, एक ही घर है। एंड नाउ क्वीन H4, वेल प्लेड, नाइस टू मीट यू, सी यू लेटर, बाय बाय। बताओ कैसा खेल पलटा है? कहाँ तो व्हाइट मात कर रहा था और कहाँ व्हाइट के ऊपर मेट हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने इस पोजीशन में इस पॉन को मार लिया। तो करना क्या है फिर? यहाँ खेलोगे क्या H1? कोई चेक नहीं है, यहाँ खेलना है। बहुत बड़े गधे हो तुम अगर तुम यहाँ। Sir, F1 would be a promotion. हाँ, वो पॉन प्रमोट करेगा, और क्या बनाएगा वो? हाथी बना लेगा, क्वीन भी नहीं बनाएगा, वो कहेगा हाथी। तो भाई लोगों, इस पोजीशन में मूव क्या है जीतने के लिए? Of course, King F1 is the move. King F1, which was played in the game. White has calculated everything when he played Rook A7. तभी से उसने ये पूरा खेल देखा है दिमाग में कि ऐसी पोजीशन आएगी, चेक आएगा, किंग F1 आ जाऊंगा, अब कोई चेक नहीं मेरे पास। एंड नाउ आई एम थ्रेटनिंग दिस चेकमेट। क्वीन F7 चेकमेट का आइडिया है इसका। तो यहाँ पे नाइट G3 करोगे, वो मार देगा, कोई फायदा नहीं। तो उसने खेला क्वीन E8। और अब आखिरी ऑडियंस, आखिरी चाल आ गई आपकी, बस अब आखिरी वो आ गया, आखिरी पड़ाव। व्हाट इज अ मूव नाउ? अभी भी अगर अच्छा नहीं खेलोगे हार जाओगे। उसके पास में दो दो मोहरे ज्यादा है, घोड़ा ज्यादा है, ऊंट ज्यादा है। व्हाट इज अ मूव नाउ? कैसे जीतोगे ये पोजीशन? कौन है सुपर ब्रिलियंट ऑडियंस में आज? व्हाट इज द मूव टू विन? कैन यू बिलीव? ये सब व्हाइट ने रुक A7 पे कैलकुलेट किया हुआ था व्हेन ही प्लेड रुक A7। क्वीन E8 मेट तोड़ी है यार। हरजीत क्या कर रहे हो यार बेटा? यार किंग से मार देगा वो, किंग से। C6 करोगे, क्वीन इंटू क्वीन मर रही है फ्री में। अरे यार गंदी चालें मत बताओ यार। रुक D8 करोगे, वो क्वीन इंटू रुक मार लेगा, अकेली क्वीन से कौन सी मात है वो? अरे यार गंदी चालें नहीं बताओ, कम ऑन गाइस। अदिति ने, शारवी ने लिखा है बहुत ही ब्रिलियंट मूव, वेल डन शारवी। इलाक्षी, साकेत, नहीं साकेत का चाल अच्छा नहीं, इलाक्षी एंड ये कौन है? एक मिनट रुको, अदिति, अदिति फ्रॉम US। तुम्हारी दोनों चालें सही है, लेकिन तुम पूरा लिखोगे तो और अच्छा है। शारवी हैज रिटन द कंप्लीट आंसर। द मूव इज रुक F7 चेक। अगर किंग G8 खेलोगे तो ऑब्वियसली क्वीन इंटू क्वीन फ्री में मरी रही है, मात हो ही जाएगी।
तो उसने मारा क्वीन इनटू। नाउ व्हाट इज द आइडिया? अब ये पिट गया, अब क्या करें? कम ऑन संजीत, कैन यू टेल? So, वेल डन मीनाक्षी। so I think it's D7. नो, मार देगा वो क्वीन। प्रमोट करोगे किंग F7 आ जाएगा। हाथी, ऊंट, घोड़ा, 3 पीस ज्यादा है। एंड नाउ द मूव इज क्वीन C8 चेक। चेक दो, सारे स्क्वायर ब्लॉक है, एवरीथिंग ब्लॉक। चेक। अब वो आएगा क्वीन बीच में। एंड नाउ द मूव इज संजीत, अब बता दो। Sir, now it is D7. Now D7, now D7, attacking the queen, supporting our queen. अब उसको ये मारना पड़ेगा, there is no other way, कोई और चाल नहीं है। और मारेगा तो अपना हाथी यहाँ पे क्वीन आएगी। तो गेम में क्या हुआ? गेम में उसने खेला किंग F7। तो एक ही बात है, इसने मार के बनाया क्वीन। अब वो सोच रहा है यार अभी भी मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है क्वीन के बदले, और ये पॉन भी आगे बढ़ी हुई है। अरे भैया, क्वीन बहुत पावरफुल है। चेक। C6। वो कह रहा है ले क्वीन पिटा ले, दूसरी रवाना, रुकती नहीं है। क्या पास पॉन्स होती है दुनिया में यार, क्या खेल है पास पॉन्स का। तो उसने क्या किया? E4। अब उसका आइडिया आ रहा है कि मारूंगा और ये मारेगा तो बिशप E5 आ जाएगा। तुम समझ रहे हो उसका चोर चाल? तो उसने क्या किया? C7। अपने को क्या है, क्वीन बनाएंगे हम। E3। अरे बाप रे बाप, अब ये एक और आ रही है जान को आफत। चेक। और ये नई क्वीन उसकी भी तैयार। देखो तुम ब्लैक भी पूरी कर रहे हैं, जहां गलती करोगे वो फंसा लेगा तुम्हें। तो अब सही चाल क्या है? चेक। क्वीन मत बना लेना। चेक। चेक। चेक वापस दी उसने, वापस चेक दी। ऐसे ही एक थोड़ा सा 40 मूव्स के आसपास टाइम कंट्रोल का फायदा उठाने को। एंड नाउ द की मूव ऑडियंस, विनिंग मूव लिख दो जल्दी से। बहुत सिंपल मूव है। विनिंग मूव, वाइट टू प्ले। वेल डन इलाक्षी सुहानी, वेल डन साकेत, वेरी गुड यार, वेल डन शार्वी। C8 तो गलत है बेटा। C8 अगर तुम करोगे ना प्रदोष, तो वो E2 पॉन चेक देगा और तुम इसको मारोगे, वो क्वीन चेक मेट कर देगा, उसकी क्वीन बनेगी चेक के साथ। E2 आ रही है उसकी चाल। E2 तुम्हें जो करना है चेकों में करना है। सो द करेक्ट मूव इज कैप्चर द रूक। चेक, मारना पड़े। एंड नाउ पॉन प्रमोशन, क्वीन। अब हमारी फिर क्वीन आ गई, उसके पास केवल बिशप नाइट है। हालांकि ये पॉन थोड़ी सी खतरनाक जरूर है, लेकिन क्वीन इज वेरी पावरफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने खेला बिशप H6, ही वांट्स टू सपोर्ट द पॉन एटलीस्ट। अब इसने रवाना कर दी चेकों से। चेक। चेक। क्वीन टू B6 चेक। किंग D7 और ये मार दी। अब घोड़ा मर रहा है भाई साहब, और बिशप भी मर रहा है। तो उसने क्या किया? उसने यहाँ पे फिर चोर चाल लगाई। चेक। अगर तुमने किंग से पॉन मार लिया E2 वाला, E2 वाला या, तो क्या होगा पता है क्या किसी को? संजीत, क्या होगा अगर ये पॉन मार लिए तो क्या होगा? ब्लैक जीत जाएगा। कैसे? Sir, he would promote the pawn. अरे यार संजीत, नो, ध्यान से देखो। No, sir, he would pay knight F4. नाइट F4, नाइट F4, फोर आ गया। ब्लैक इन द गेम। देखो अब तक भी उसने चोर चाल लगाई है, लेकिन व्हाइट ने सब काउंट किया हुआ है। उसने F2 को मारा, E2 को नहीं मारा। बोले ये तो क्या है, कभी भी मार लेंगे, बनेगी जब बना लेंगे। अब उसने खेला बिशप चेक। देखो यार, आप चोर चालों का देख रहे हो कि नहीं, दौर चल रहा है। किसको मारोगे? बिशप E3 चेक, क्या चलोगे यहाँ पे? व्हाट इज अ विनिंग मूव? अगर किंग से पॉन मारोगे, नाइट F4 चेक, फोर्क। किंग इंटू बिशप मारोगे क्या? वो पॉन प्रमोट कर लेगा क्वीन। तो व्हाट इज द मूव देन? क्या करना चाहिए? किंग E1, वेल डन एवरीवन, किंग E1 इज द मूव नाउ। किंग E1, वेल डन, शाबाश। और यहाँ पे ब्लैक ने पता है क्या किया तुम्हें? कैन यू बिलीव यहाँ क्या चला? ब्लैक ने क्या किया? ओ माय गॉड, उसने इस घोड़े को पिटाया ही नहीं।
क्या किया? व्हाट डिड ब्लैक डू हेयर? रिजाइन। अरे क्या बात है, ब्लैक रिजाइन है यार, घोड़ा पिटाया नहीं उसने, घोड़े को बचा लिया। रिजाइन, वेल डन। तो बताओ मजा आया कि नहीं गेम में? प्लीज राइट इन चैट ऑल ऑफ यू। था कि नहीं जबरदस्त गेम? Yes, sir. ग्रिगोरी सरपर वर्सेस आयोनिस। वापस देखें एक बार जल्दी से। फ्लेवर गास्टिंग गेम। गेम की तारीफ कर रहे हो या अपनी वोकेबलरी दिखा रहे हो स्टूडेंट्स? ऑसम। फ्लेवर गास्टिंग। और ये है मूव यार, ये है। ओहो हो, ओहो। और ये ले बेटा, अगर ये मारा तो क्वीन D5, माइंड बॉगलिंग मूव। अरे बाप रे, डिफ्लेक्शन की वन ऑफ द बेस्ट। ये एक और खतरनाक हाथी पिटाकर D7। अरे भाई, C6। रिजाइन। ओके, वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। और हम चलते हैं आज के मूव ऑफ द डे में। एंड दिस इज प्लेड बाय आइडेंजर वर्सेस वेफन स्किमिट। तो वेफन स्किमिट जो है वो जर्मनी के हैं, व्हाइट में है, और ब्लैक में आइडेंजर है। तो ये पोजीशन है और ब्लैक की चाल है। तो मतलब यार इसमें क्या है, थोड़ा सा उसका D5 का आइडिया आ रहा है, और वो नाइट अटैक करेगा, और बिशप B4 का आइडिया लगाएगा वो थोड़ा सा क्वीन अटैक करते हुए। लेकिन इस पोजीशन में बहुत लॉजिकल मूव है कैसल, जो ब्लैक ने किया। किंग सेंटर में पड़ा है, पहले इसको कैसल करो। अब यहाँ पे उसने खेल दिया D5। व्हाइट वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि वो करेगा क्या। अब ये पीस मर रहा है तुम्हारा। अगर तुम घोड़े को कहीं भी हटाओगे, मान लो तुमने कहीं भी चला घोड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो बिशप B4 से तुम्हारी क्वीन ट्रैप हो गई। इफ यू कैन डू द एनालिसिस, क्वीन को कोई घर नहीं है, सब ब्लॉक। ये क्वीन ब्लॉक करेगी, यहाँ बिशप रहेगा तुम्हारा, यहाँ बिशप रहेगा, और पीछे आ नहीं सकते क्योंकि व्हाइट का बिशप यहाँ आने वाला है B4। तो इफ यू कैन डू द एनालिसिस, D5 वॉज प्लेड बाय व्हाइट। अगर तुम नाइट को कहीं भी हटाओगे, बिशप B4 एंड द क्वीन इज ट्रैप्ड, ऐसा आइडिया व्हाइट ने लगाया। तो ब्लैक ने कहा यार अब क्या करे, वो तो खैर पहले ही उसने सोच लिया होगा कि प्लेड नाइट E5, नहीं तो सीधा पीस कौन पिटाए। व्हाइट ने कहा यार बड़ा बेवकूफ खिलाड़ी है, बिशप B4 एंड नाउ द क्वीन इज ट्रैप्ड। उसने कहा यार अब ये रिजाइन करेगा, पता नहीं कैसे खिलाड़ी है ये, देखते ही नहीं है। नाउ ऑडियंस, what is the move here? Can you believe the idea of Eidinger which he had 2 moves back? तभी उसने कैसल किया। What is the move? क्वीन A2। क्वीन A2 अगर तुम करोगे तो बिशप से मार देगा। There is an idea here. What is the idea? कहाँ क्वीन बचाए यार, क्वीन तो बचती नहीं गई, ये क्या बकवास चाल है ये। Sir, knight to D3. नाइट D3 चेक। Yes, sir. अच्छा, नाइट D3 चेक। तो यार इसमें भी पीस तो पिट जाएगा ना तुम्हारा, वो बिशप से मार देगा, है ना। घोड़ा तो, क्वीन तो तुमने बचा ली, लेकिन घोड़ा तो मर गया फ्री का, एक पीस मर गया। और दूसरी बात मुझे पता है क्या लगता है, यहाँ से भी क्वीन तुम्हारी बचेगी नहीं। तुम ध्यान से देखो यार, कहीं घर नहीं है क्वीन को, अभी भी कहीं घर नहीं है। नाइट टू C1 एंड द क्वीन इज स्टिल ट्रैप। ओ माय गॉड। तो कमिंग बैक टू दिस पोजीशन, नाइट D3 इज ऑल्सो नॉट गुड। कई लोग लिख रहे हैं नाइट F3 चेक, दैट्स अ गुड आइडिया। अगर मारा तो क्वीन F3 करके बच जाएगा, फिर इसको अटैक करेगा, इसको मारेगा, किंग सेंटर में है। लेकिन वो किंग F1 खेल लेगा चुपचाप, कुछ करेगा नहीं वो। अब क्या कर लोगे दुनिया में?
नाइट यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारा, यहाँ आता नहीं, यहाँ आता नहीं, इसको मारोगे हाथी पड़ा ही है। अब फिर हार गए तुम, लॉस पोजीशन फॉर ब्लैक, क्लियर लॉस। तो ये पोजीशन में क्या करें यार? व्हाट इज द सरप्राइज मूव प्लेड बाय आइड एंजल? ओहो ऑडियंस कम ऑन। इलाक्षी ने अब एक अच्छी चाल बताई है, शी इज सेइंग क्वीन h3। आई लाइक हर आइडिया, आई लाइक हर आइडिया, but there is a better move than this, Ilakshi, which was played by black. And will you believe the move played was queen f3? My god. क्वीन f3 was played in the game, और अब व्हाइट का दिमाग खराब हो गया। जो उसको लग रहा था कि मैं तो जीत रहा हूँ, ये ब्लैक रिजाइन क्यों नहीं कर रहा, अचानक उसको लगा कि अब मैं रिजाइन क्यों नहीं कर रहा। बिकॉज इफ ही कैप्चर विच ही डिड, नाइट इनटू pawn check, everything is blocked, and bishop h3 is a checkmate actually in the center of the board. Sanjit, मजा आया कि नहीं? Yes, sir. Can you see this checkmate? My God. Can you believe? Can you believe the idea? तो क्वीन f3 की प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम मारोगे भी नहीं, तुम g2 मार रहा हूं मैं, तो तुम कैसा अगर करोगे, मैं तुम्हारी सेंटर पॉन मार दूंगा। एंड दिस इज अ क्लियर प्लस पोजीशन फॉर ब्लैक, क्लियर प्लस पोजीशन। सेंटर पॉन मर गई, ये बिशप खुला है, ये भी खुला है, और अब ये भी अटैक में है एक बार के लिए। मैं यार कुछ नहीं है इसमें, क्लियर प्लस। तो क्वीन f3, कैन यू बिलीव द आइडिया? इसीलिए कहते हैं भैया कैसल करना चाहिए हमेशा। किंग सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द गेम ऑफ चेस। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, कमिंग टू होमवर्क, सुहानी, आई थिंक सुहानी नहीं, रिमझिम, रिमझिम हैज नॉट जॉइंड अस, और मुझे लगता है ये रिकॉर्ड तोड़ेगी रिमझिम। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू रिमझिम। तो ये जो होमवर्क था भाई साहब, ये लास्ट क्लास का होमवर्क पोजीशन है। एंड शार्वी हैज आल्सो आंसर्ड दिस, देयर आर टू स्टूडेंट्स, रिमझिम एंड शार्वी। चलो शार्वी तो ठीक है, अब घर में ही है अपने, कोई नहीं। हाँ, बट देन आई हैव डन द प्राइज टू जीपे प्राइज टू रिमझिम, आई हैव ऑलरेडी गिवन हर। तो ये पोजीशन था, क्वेश्चन था व्हाइट टू प्ले एंड मेट इन टू। आई हैव रिसीव्ड 10-12 emails इंक्लूडिंग साकेत एज वेल, बट देन इट्स नॉट करेक्ट। साकेत, जो आपने लिखा है पूरा सही नहीं है। क्वेश्चन था व्हाइट टू प्ले एंड डू अ चेकमेट इन 2 मूव्स, दो ही चाल में चेकमेट करनी है हमें। व्हाट इज द आइडिया? दो चाल में चेकमेट। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्वीन टू b2, and this is very difficult idea. If you move your rook somewhere, for example rook b3, for example, then queen h8 is a check. If you move your rook, the diagonal open up, and if you move this pawn, for example pawn into pawn, then this diagonal opens up. Queen to b7 is a checkmate, everything blocked. So you can't move your rook, you can't move your pawn, king is as it is blocked. If you move your knight, for example knight to d2, then king into knight is a simple checkmate, discover check by the rook on a1. And if you move your knight to a3, then king d2 is not a checkmate because the knight is coming back to b1. Oh, oh. So the problem is what happens on knight a3? How to do a checkmate? Can you write in chat, anyone? Knight to a3. How can we do a checkmate in just one move? Is it possible? Sharvi has written the answer, of course. Saket has also got the idea now. Oh, there is a checkmate in one move. संजित, दिख रहा है क्या आपको? बहुत डिफिकल्ट। किंग टू d2 अगर करोगे अदिति, तो नाइट बीच में आएगा बेटा, नाइट इज कमिंग बैक टू b1. If you do king d2, knight b1, there is no checkmate. So how to do a checkmate here then?
My God, rook h5 is not a checkmate. The king comes to g2. Queen to b7 चेक ही नहीं है बेटा. Pawn आ रही है रास्ते में. It's not a check at all. कोई है क्या जीनियस खिलाड़ी? एक चाल में चेकमेट अभी. नो. अरे the move is, can you believe, Sanjay? ट्रिपल ओ लॉन्ग कैसल. जब भी किंग इवन पे होता है और रुक एवन पे होता है इन पजल्स, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग आइडिया टू ऑलवेज कंसिडर कैसल. एंड नाउ इट्स अ चेकमेट. अब ये नाइट कहां से बीच में आए? So this is the question of the last homework. Queen b2 is the answer. So coming back to today's homework, please mail your answers by Wednesday. And I'll tell you my mail ID again. I'll write in chat also. Chess with Gaurav Bakliwal @gmail.com. और आपका जो आज का होमवर्क है बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है और वो ये है आपके सामने. वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन, वेरी इंटरेस्टिंग. द क्वेश्चन आस्क्ड इज, ये जो पोजीशन है इज इट अ लीगल पोजीशन? आपको केवल ये लिखना है लीगल विद एक्सप्लेनेशन. और आपको लगता है कि नहीं, इट इज नॉट लीगल, दिस पोजीशन कैन नॉट अकर ऑन द बोर्ड, विद एक्सप्लेनेशन. इज दिस पोजीशन अ लीगल पोजीशन? आ सकती है क्या ये बोर्ड पे? व्हाइट और ब्लैक गेम खेल रहे हैं रूल्स ऑफ चेस फॉलो करते हुए. कैन यू गेट दिस पोजीशन ऑन बोर्ड? तो थोड़ा सा समझा देता हूं. ये बिशप अंदर कैसे आया होगा? ये बिशप यहाँ कैसे आया? ये यहीं से आया होगा, और तो कोई तरीका नहीं. मतलब g3 हमने बाद में चली है, पहले बिशप अंदर घुसा है और फिर g3 चली गई है. तो अगर बाद में g3 चली है तो ये बिशप बाहर कैसे निकला होगा जो यहाँ आ गया? ये भी तो यहीं से ऐसे ही घुसा होगा. तो इसका मतलब ये पहले घुसा होगा तभी b3 चली होगी. अगर तुम पहले b3 चले तो ये घुसा कैसे? तो अगर b3 बाद में चली है तो ये कैसे निकला? बिशप c1 कैसे निकला होगा? तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इज दिस पोजीशन a legal position or not. Okay guys, any question for today? Anything? No? Please write in chat. मजा आया कि नहीं? Did you enjoy the session? Yes, Sanjit, please speak up. Yes, sir, the session was very interesting. Okay. तो तुम कहना चाहते हो कुछ? You want to speak something? Thank you Yes, वगैरह sir. कहना? Yes, sir. Thank you so much, dear Gaurav sir, to give me this opportunity to volunteer this event. I enjoyed very much, and it was a great fun to interact with you as well as the lovely audience. It really gave me a nice platform to learn chess with you. Thank you, sir. Thank you, everyone.